Hi everyone, it's fantastic to have you all here. Are you able to hear me out? I'm just checking if everything is good to go and you are able to hear me, see me clearly. Very warm welcome. Today is Tuesday at 4 and I'm going to talk about काल चक्र क्योंकि ये वीकेंड पे दोस्तों हमारा काल चक्र टाइम साइकिल का सेशन है सो आई थॉट व्हाई नॉट टू कम लाइव एंड टॉक टू यू अबाउट काल चक्र how to look at time, how to prepare yourself for the upcoming weekend training, which is going to talk about time cycles and उसे कैसे यूज करना है, कैसे देखना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा प्रोसेस काल चक्र का। तो आप सभी को जो भी पार्ट है काल चक्र या ब्रह्मास्त्र के, आपको प्री सेशन वीडियो मिल गया होगा, नहीं मिला तो यू कैन जस्ट लेट माय टीम नो एंड दे विल गिव इट अक्रॉस टू यू। पहले तो बात करते हैं कि मार्केट्स में हो क्या रहा है एंड देन वी विल मूव ऑन टू काल चक्र एंड हाउ टू लुक एट दीस टाइम साइकिल्स एंड एज एक्सपेक्टेड। Do you remember that last week I have talked about that for 3 to 4 days there is going to be selling pressure and market should correct, and it's going to be at least until Tuesday, Wednesday where we are going to see some correction which is going on right now. And we also talked about how 215, 230 is the time from where Nifty can show some kind of a reversal, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्म होना चाहिए। प्राइस एक्शन देखेंगे तो निफ्टी ने 215 के आसपास एक लो बनाया, वहां से माइनर पुल बैक दिया, लेकिन अभी तक प्रीवियस डे के ऊपर प्राइसेस ने बंद नहीं किया। तो ये प्राइस और टाइम सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड very clearly that price and time should sync together. So for example, if I know that at a specific time frame market should go up, I should also be able to find out price action. If I look at it in the morning when I tweeted across Nifty levels for 23,560 and the lower support is 23,330, Nifty just went above 23,560, 565 तक गया, वहां पर whipsaw किया and reverse back. There was not a single 15-minute close or an hourly close above that level. So it's very important at times कि 15-minute close तो हमें मिलना ही चाहिए. Then it broke below 23,330, which was an hourly close, also happened below that, which confirmed that the downtrend has continued. And then we went all the way towards 23,130 odd level. So that's the entire zone that we can clearly see prices traced. And later मैंने tweet किया था 23,130 is the support from where price actually showed some kind of a bounce back. तो यहां पर अभी करना क्या है, मार्केट को टाइम साइकिल के बेसिस पे, काल चक्र के बेसिस पे देख के क्या लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ लूनार साइकिल। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द लूनार साइकिल व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द लूनार साइकिल मूवमेंट दैट देयर इज गोइंग टू बी अमावस्या ऑन सैटरडे, उसका इंपैक्ट इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days, and we are clearly seeing the impact of the lunar cycle. तो हो क्या रहा है, पूर्णिमा के साइकिल पे प्राइस आर गोइंग ऑन द अपसाइड, अमावस्या के साइकिल पे प्राइस आर गोइंग ऑन द डाउनसाइड। दिस इज अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड बिहेवियर इन एक्सपेक्टेड लाइंस व्हिच इज इन सिंक व्हेन निफ्टी वाज इन एन अप ट्रेंड प्रायर टू अक्टूबर 2024। तो मैं ये पूरा चार्ट आपके सामने दिखाऊंगा लूनार साइकिल का, एंड वी लुक एट the levels as per the काल चक्र सेशन, काल चक्र also, and ये सारी चीजें हम आज बहुत सिंपल वे से चेक करेंगे और सिंपल वे से देखेंगे। तो लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस अ वेरी क्विक चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ काल चक्र विच इज नोन एज टाइम साइकिल। सो यहां पर मैं बहुत क्विकली मेरे स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं दोस्तों। इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन हियर, यहां पर आप देख पा रहे एवरी वन ऑफ यू। यहां पर निफ्टी का ओवरऑल जो ये काल चक्र की लाइंस है, ओके, दिस इज द लाइन एंड दिस इज द चार्ट वेयर वी टर्न सुपर बुलिश एज पर द काल चक्र टाइम, and we are seeing that this time cycle started at 215 and the low made by Nifty around that time area was also in sync with what we were expecting around 23,137, and there was some attempt on the upside. So यहां पर हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि निफ्टी ने लो बनाया और वहीं से रिवर्स होके प्राइसेस ऊपर जाने का अटेम्प्ट थोड़ा सा किया, माइनर अटेम्प्ट है, मेजर अटेम्प्ट नहीं हुआ है यहां पर ब्रेक ऊपर करने का। सो दिस इज द करंट स्टेट ऑफ
the 43 period time cycle. So Nifty is standing on 43 period of time cycle, which was due at 2:15 p.m. and prices made a low on that time near 23,137 levels. Yet to see ब्रेक अबाउ द स्विंग हाई, माइनर स्विंग हाई तो देखेंगे हम कि ब्रेक अबाउ स्विंग हाई विच विल ब्रिंग प्राइस एंड टाइम इन सिंक, विच विल ब्रिंग प्राइस एंड टाइम इन सिंक। ओके, यहां पर अगर आप देखोगे बहुत क्लियरली ये एक जो स्विंग है उसके ऊपर जाना चाहिए, आइडियल स्विंग लेवल हो गया हमारा। इफ आई एम चेकिंग दिस हाई, दिस इज द स्विंग हाई, आर यू एबल टू सी दिस चार्ट? Every one of you. So if I'm looking at this level, this is the swing high that we are seeing on the chart here. That's the swing high. So price have to move above the high of 23,260. That's the ideal swing high for me to get a confirmation, but then it becomes too far away to get that confirmation। या 260 तो बहुत दूर हो गया, मतलब वहां से लो से 130 से 260 इंट्राडे ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। तो छोटा सा जो लेवल आता है वो 23,220 आता है। 220 इसलिए क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन था, उससे थोड़ा सा लीवे दिया। सो 23,220 का मैंने एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन ट्वीट भी किया था। सो विच मींस बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, नाउ आई हैव टू गेट इन माय माइंड प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। उसके साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि यार अमावस्या वाली जो साइकिल है वो बड़ी टाइम फ्रेम की साइकिल सेल साइड पे है 2 दिन के लिए। Now, if that cycle is on the sell side for 2 days, now tell me, will it be easy to make money by buying call option? I'm asking you all, will it be easy to make money by buying call option? Every one of you, I want you to participate, I want you to learn, I want you to understand how to trade this time, जो हम बहुत डिटेल में वीकेंड पे करेंगे। It will not be easy, which means from here on, you might either want to sell a put option, not now, after you get a confirmation that prices are breaking above the hurdle। तो वो कंफर्मेशन मुझे मिलेगा काल चक्र के लेवल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे होता है मार्केट को सही तरीके से ट्रेड करने का। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू ट्रेड यूजिंग दिस science in a very systematic fashion, and people who are watching this on YouTube, if you want to be with me on the Zoom platform, आप Zoom पे आ सकते हो, which will give you a much better way of looking at the chart। So let me just invite you on the Zoom platform. You can even join me on the Zoom platform। Let me just share across the link। यहां पर दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, डेली ट्रेंड अभी भी बुलिश टर्न वापस नहीं हुआ है। ठीक है, मैं कितना भी फोरकास्ट करूं, बट प्राइस एक्शन भाव भगवान छे याद रखना है। तो मतलब डेली ट्रेंड, डेली क्लोज पॉजिटिव नहीं हुआ है, मतलब गड़बड़ है। फिलहाल आवरली क्लोज मैं अगर आपको इस चार्ट पे दिखाता हूं, 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट, 1 आवर की कैंडल, अगर आप ये देखेंगे तो 1 आवर का जो क्लोज है, आर यू एबल टू सी दिस नाउ मच क्लियर? तो इफ यू आर लुकिंग एट दिस चार्ट, इफ यू चेक, even the 1 hour candle close has not given since this level। ये तो दिस वाज 315, सो इस कैंडल को इग्नोर करना है। यहां से ये लेवल से आज पूरे दिन में एक भी आवरली क्लोज जो है वो प्रीवियस लेवल के ऊपर नहीं किया मार्केट। आर यू विथ मी एवरी वन ऑफ यू? सो प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, विच मीन्स फिलहाल निफ्टी पे प्रेशर बना हुआ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिलहाल निफ्टी पे प्रेशर बना हुआ है क्योंकि इसने अभी तक प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं किया, इसने अभी तक प्रीवियस 15 मिनट स्विंग हाई को नहीं निकाला, लेकिन जो टाइम है, टाइम मेरे सिंक में आ रहा है। सो टाइम इज ऑन द बाय साइड, विच मींस दैट नाउ आई हैव टू बी अलर्ट जस्ट इन केस प्राइसेस यहां से अगर रिवर्स होता है और यहां से अगर प्राइसेस ने कंफर्मेशन मुझे दे दिया ऊपर आने का, तो मुझे बहुत ही शानदार ट्रेड सेटअप यहां पर बन के मिलेगा everyone। So you have to remember very clearly that once I see this confirmation happening, I will get a very clear trade setup on the buy side if I go on a 15 minute chart। और इसको बहुत सही तरीके से और ट्रेड करना है तो आपको एक इंडिकेटर यूज करना चाहिए which is known as FLD।
वो एक इंडिकेटर होता है, या इसके साथ में आप केएसटी इंडिकेटर को अप्लाई कर लीजिए. सो इफ आई कम ऑन दिस चार्ट राइट नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई एम गोइंग टू अप्लाई एन इंडिकेटर विच इज नोन एज केएसटी. वन सेकंड. एंड केएसटी इज अ मोमेंटम इंडिकेटर. ठीक है, केएसटी को मोमेंटम इंडिकेटर कहा जाता है. मून फेजिस को हमने ऑलरेडी देखा है. नाउ ये मैं खाली एप्लीकेशन बता रहा हूं, डिटेल्ड में हम इसके ट्रेड सेटअप को वीकेंड पे देखेंगे, सैटरडे और संडे 5-6 अप्रैल को काल चक्र में. वी आर गोइंग टू लुक एट इट इन मच डिटेल फैशन. सो फिलहाल व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट शोइंग यू द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड. If I look at the KST indicator overall, which is the momentum time indicator, this indicator is useful when prices have crossed over. मतलब थोड़ा अटेम्प्ट हुआ है नीचे का मोमेंटम कम करने का, लेकिन हम केएसटी को बाय सेल नहीं कर रहे, हम प्राइस को बाय और सेल करें. तो वो आपको हमेशा से ध्यान रखना है. वी आर नॉट बाइंग एंड सेलिंग केएसटी, बट वी आर बाइंग एंड सेलिंग prices and prices alone. So once I see a movement above the high, which means थोड़ा मोमेंटम नीचे का कम हुआ है, but there is no buying, it can again turn down if price breaks the low. दूसरी चीज, if prices are breaking above the high, the swing high, and the KST also confirms, I get a classic trading signal. Okay, that's one. If I apply another indicator which is known as Pring Special K, Pring Special K is a pure time cyclical indicator. Pure time cyclical indicator. Pring Special K is a pure time cycle indicator. वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर प्रिंग स्पेशल के से हमें पता चलता है ओवरऑल जो ट्रेंड है, वो कब रिवर्स होगा. सो आई हैव टू जूम आउट. ये पूरे के पूरे को जूम आउट करेंगे तो ये एक साइकिल बन के नजर आएगा मेरे पास. ये जो प्रिंग स्पेशल के है, दिस इज नॉट अ सिग्नल टू बाय और सेल. प्रिंग स्पेशल के इज अ टाइम cycle indicator which helps us to understand what is or when is the time going to turn back. Using this Spring Special K, it takes 2 minutes, literally 2 minutes, for you to identify a time cycle of any stock. It is such a powerful method. It's developed by Martin Pring, my mentor, and it's a very powerful method जो आपको मार्केट की साइक्लिकलिटी के बारे में, स्टॉक्स के बारे में 15 मिनट्स पे, डेली चार्ट पे, एवरी टाइम फ्रेम, एवरी सिंगल स्टॉक can be this indicator can be used on every single stock, and you can derive the time cycles on those stocks. Now that's the beauty of using the Pring Special K indicator. That's the beauty of this indicator. The reading of this indicator is at an extreme level which we never seen. This is a 15-minute chart I am talking about. If I see this indicator, extreme reading I am talking about was at the level when markets were at the high here. So when Nifty is level pe tha, this was the top. When Nifty was at this level, this was the top here. That's the level. This is the peak that we have seen on Pring Special K. Okay? Post that, Pring Special K never reached that level until now. This is the second, or this is the first time after the entire top, after the entire fall. This was in September 2024. उसके बाद से पूरा fall आया, and for the first time Pring Special indicator has again gone above the prior peak. Are you able to see this? Is it only me, or are you also able to see and make out this जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये फिर से प्रायर पिक के पास में गया है? Clear है every one of you? So this clearly shows that since it has again got back to the prior high, there is some kind of a change in the trend, which means something has again changed, which is in sync with our view of Neo Wave, which is in sync with the view कि शायद बड़ा trend ऊपर आ रहा है. That's the entire intention. That's in sync. Now, once that is in sync, it becomes very convenient for me to then trade using this method. So this is how what Pring Special K is. So KST indicator says that we are at a extreme low. Can you see this indicator का extreme reading also? यहाँ पर, are you able to see this?
everyone. So you can clearly see there is an extreme reading on the downside here. And in this extreme reading on the downside, we can see that the overall trend for the market has also is a downtrend. This does not mean I am going to buy. This means selling now is risky. As simple as that. यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि डेली इज बेरिश, आवरली इज बेरिश। 15 मिनट पे पुल बैक आया है लेकिन सस्टेन नहीं किया। वी नीड टू वेट, इन शॉर्ट वी नीड टू वेट। यहां से हो सकता है नीचे का प्रेशर कंटिन्यूड रहे एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ट्रम्प एंड दिस एंड दैट। आई एम लुकिंग एट प्योर चार्ट्स. I'm going to look at how is this time cycle going to behave now. Is it going to help prices to go above this level or price continue to break the low of 23,130 जो मैंने tweet किया था and the pressure continues. If the pressure continues, I avoid buying. If the swing high is broken, I have a very strong method there. I have a very clear strategy there. यहाँ पर. So what I am trying to tell you, बहुत simple है. ભાવ ભગવાન છે, સમય બલવાન છે, ટ્રેડર પહેલવાન છે, which means that you need to understand very simply what is price action suggesting. If the price action is bullish, what is time suggesting? Are we in the buy side of the time? If that's the case, then you follow the process with a discipline and you will be able to make money. And you have to use a stop loss. So what we did is just now, we looked at one very simple aspect of price action, which is taking out the swing high. We looked at the other aspect of KST, which indicates कि यार हम extreme reading पे आ चुके, लेकिन KST is a momentum indicator which can still further go down. And we looked at Pring special K. So if we are looking at the Pring special K indicator, we can see the Pring special K indicator right now showed an extreme reading, which means at one level of trend. So there are multiple trends in the market. There is a bigger trend which is driving the bigger tide. So as I keep example of the ocean waves. Ocean waves का मतलब होता है there are smaller waves, there are bigger waves, all of those things. So one is a bigger trend that's driving the bigger overall outlook. Then there is a smaller wave which is driving the smaller moves. And if the bigger wave and the smaller wave are in sync, that's where you get the maximum amount of momentum. To measure that maximum amount of momentum, you need to look at these time indicators. Okay, ये time indicators है जो आपको देखना है if you want to get the maximum amount of momentum from the market. Am I making sense? So this is how you have to club it. But what I am trying to show you is an application right now. If you want to learn this science in complete totality, if you want to know how this actually works in a very systematic fashion on a historical chart, I'm not going to show you on this latest chart. I'm going to show you on a historical chart. Because if it's work in the history, it will work now. होता कैसे? I'll tell you one secret. अगर बहुत क्लियरली ये सभी के साथ रेजोनेट होगा, वो सीक्रेट क्या है? अगर मेरा बायस, if I'm biased on any side, maybe on the long side or the short side, for whatever reason, I will try to search for buying opportunity in every indicator. Am I making sense? Or I might want to search for buying news that justifies my bias. That's a trading psychology. That's how human beings behave. So if I want to if I'm biased, I will be looking at, if I look at the latest chart, I will try to put across all the bullish things together. If I'm bearish, I'll try to put across all the bearish things together. In order to remove this bias out of trading, the simplest way is to look at this historical chart, and not the latest one, maybe 3 months back, 5 months back, 6 months back. उस चार्ट पे यही सिचुएशन को सिमुलेट करना है. So simulate the same situation and try to see if in this situation, what was the expectation and how did markets behave? If that happened well, as expected, the current situation will also work. And that's what we are going to do in this Kalchakra on 5th, 6th April, where we are going to look at these parameters of Pring Special K. We are going to see the bigger market trends and cyclicality. Pring Special K, अगर एक बार आपने ठीक से समझ लिया, I'm telling you, it will take you
2 minutes, only 2 minutes, in order to find out time cycle of your stock. That's the beauty of this indicator. 2 minutes. सोचिए कभी आपको ऐसा कोई चीट कोड मिला होगा which mentions that in 2 minutes find out time period of your stocks. कब रिवर्स होने वाला in 2 minutes. That's what Pring Special K does. But उसका एप्लीकेशन, उसका कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो आपको सीखना पड़ेगा. वो देखने के बाद में ये बड़ा व्यू हो गया. उसके बाद में छोटे व्यू के लिए हमें KST अप्लाई करना है टू सी वेयर इज द मोमेंटम जनरेटिंग. इज इट ऑप्शन बाइंग मार्केट, इज इन ऑप्शन सेलिंग मार्केट, वेयर इज द मोमेंटम? दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू सी. देन वी नीड टू अप्लाई अलोंग विद दिस कि टारगेट कैसे निकालें यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ FLD. FLD is a future line of demarcation method which helps us to understand कि टारगेट कैसे आएगा. Will it work always? No. So there have been instances when it didn't work, like once I think in November, but out of 10 sample that you check, it has worked 8 times, which means the accuracy is pretty high in the past. And I've been using this since long. There have been amazing accuracy, 80-90% also, but let's live with 70-75% accuracy hoga to. So we'll use FLD in Kalchakra on 5th-6th April to derive those things. Along with that, we'll combine with Gann square of 9 to see which are the magnetic levels. So once we know the magnetic levels by deriving Gann square of 9, I know where it's going to go, how it's going to stop. It gives us a conviction basis of the Gann square of 9. We are going to club it along with that. Along with all of these signs, we are going to use a very powerful trading tool along with this method, and we are going to combine our own indicator जो हम खुद बना सकते हैं, looking at an ROC as a parameter. So we will be looking at ROC as a parameter and we will be deriving those indicators. And this complete system forms a part of Kalchakra. Okay. So we are going to start. अगर आपको pre-session video नहीं मिला है, you will get it once you have registered for Kalchakra session over the weekend. We'll be starting these 2 days of session on Saturday morning. It will be theoretical and practical examples. Theory is going to be about time cycles के concepts को कैसे समझना है, थोड़ा सा parameters है, but it's more or practical oriented. We'll be then going through the charts historically. I'm not going to discuss the latest chart for 2 reasons. First of all, historically अगर देखेंगे तो confidence आपको आएगा. Secondly, compliance doesn't allow to show the latest chart. Once the 2 days of training is done, what we are going to do next? Then you will have to practice these things on your own and share across your charts with me on the traders forum, whatever you have practiced. उसके 8-9 दिन के बाद में we will have a exclusive session with latest chart which we are going to discuss. But उसके लिए आपको 151 pay करके you will get access to 1 month of Nifty research under Kalchakra. You will get access to the latest chart section because that falls under the section of advisory where we have to go through certain documentation, and that's the compliance requirement which has come up, so we have to do it that way. So that's what we are going to do, and we will be and even post that agar aapko koi query, doubt, anything that you have, you can ask me on the traders forum, but it has to be related to Kalchakra for all the Kalchakra participants. So this is the process that we are going to follow. This is the curriculum that we are going to follow. I'm going to also ensure that these videos of weekend are given across to you for a 1 month period so that you can go through this entire section of whatever we have done. आप फिर उस स्टेप्स को फॉलो करो. मैं आपको स्टेप्स लिख के दूंगा, वो स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. वो स्टेप्स को आपको चार्ट पे जाके स्टेप 1 2 3 4 5 ये स्टेप फॉलो करने हैं, आपको चार्ट पे अप्लाई करना. उसके साथ में एक एक्सेल शीट आपके साथ में होगी जो पास्ट मैंने यूज कर रखी है फॉर कालचक्र सेशंस, जो हम नए स्टॉक्स पे डिराइव करेंगे फॉर कालचक्र सेशन. ये सारी एक एक्सेल शीट में मैं डाल दूंगा which will include the 15 minutes time frame, which will include the daily time frame, which will include some of the stocks will include weekly time frame, and we will be also looking at the Gann square of 9 angles. So we look at Gann angles, and वो Gann angles भी वो excel sheet में होगा, which I'm going to give it across to you. So you will have to put those dates and time on your charts and future dates and time in your Google Calendar.
वंस यू प्लेस दैट फ्यूचर डेट्स एंड टाइम इन गूगल कैलेंडर, आपको फोन देखना है ये वीक में कौन से स्टॉक्स के टाइम साइकिल चेंज हो रहे हैं, एंड जाके वो स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डाल देना। और जो भी टाइम साइकिल के हिसाब से, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है ना, टाइम साइकिल के साथ प्राइस एक्शन मस्ट है। भाव भगवान से समय बलवान से, विच मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या, जब मैं ट्वीट करता हूं टाइम इज ऑस्पिशियस पोस्ट 2:15 PM, पीपल स्टार्ट बाइंग देयर, बट डू दे फॉरगेट हाफ ऑफ द थिंग, यहां पॉजिटिव प्राइस एक्शन चाहिए। नाउ द टाइम इज राइट, सो वी नीड अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन, विच मीन्स नाउ आई गेट अ क्लासिक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस थिंग्स। सो वो करना बहुत जरूरी है। ओके, एंड बिना काल चक्र के 151 ज्वाइन नहीं हो पाया, बिकॉज दैट एक्सक्लूसिव मेंबरशिप दैट आई एम गिविंग इट टू यू, इट इज दैट एक्सक्लूसिव मेंबरशिप इज वर्थ 18,000 which I am giving you for 151 only to either ब्रह्मास्त्र और कालचक्र पार्टिसिपेंट्स ऑफ द करंट बैच। सो वो बिना उसके नहीं हो पाएगा। एक्सेल चार्ट कैसे मिले, एक्सेल शीट कैसे मिले, आई एम गोइंग टू बी गिविंग इट अक्रॉस टू यू। सो वंस यू आर रजिस्टर्ड, anyone who is willing to be a part of this can register on the link which my colleague has shared across, वहां जाके आप कर सकते हो। यहां पर 151 की लिंक उन लोगों को दी जाएगी जो काल चक्र के पार्टिसिपेंट्स है या ब्रह्मास्त्र के पार्टिसिपेंट्स है अभी आने वाले बैच में। सो दे विल बी गेटिंग दोज लिंक्स। एंड ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स के लिए होमवर्क जो है वो फिलहाल के लिए आपको इंश्योर करना है कि आपको जो प्री सेशन वीडियो का एक्सेस दिया है वो आप गो थ्रू ठीक से करें, प्रैक्टिस करके आइए, तो टाइम फास्ट होगा और आप ये कर पाएंगे। लिंक सभी के साथ शेयर कर दीजिए यहां पर। और यहां पर और भी काफी सारे चैट्स और क्वेश्चन आ रहे हैं। सर बलबीर कह रही, यू मैजिशियन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड टाइम साइकिल, एवरी टाइम यू ब्रिंग एंड शेयर समथिंग इनोवेटिव, थैंक यू वेरी मच। दीप कह रहे, आई लव योर मंत्र ऑफ भगवान से एंड लुक एट द प्राइस ओनली, हाउ डू यू फैक्टर इन एक्सटर्नल यूज, प्राइस इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट कर देता है, नहीं किया तो स्टॉप लॉस लगाइए ना, as simple as that. Do not clutter your mind with external news. What is Trump going to announce? Prices ko dekho, you will know. Prices are already discounted that what Trump is going to announce tomorrow. So it's already being discounted. That's why the fall has already happened in anticipation. हो सकता है वो अनाउंस करे और मार्केट ऊपर जाए, because it's already discounting the worst. Any which ways. That is how you have to look at things. Am I with you? Okay. Everyone, okay. Jaspreet keh rahe, sir, when will I get starting the Nifty research report? The Nifty research report will be with you in your email inbox. If you are a part of this and आपने register कर दिया, it should be in your email inbox. My team will just help you out. Just drop your number with this. The Kalchakra pricing is 25,960. Yes, that is 22,000 plus GST. That's the pricing of Kalchakra. Early bird offer already खत्म हो चुका है दोस्तों, बट यहां पर आप लोग आज मेरे साथ जुड़े हो और आज आए हो, इसलिए वो अभी भी वैलिड रखा है आप लोगों के लिए। ओके, सो जो अभी भी जुड़ सकते हैं, वी हैव फ्यू मोर सीट्स लेफ्ट एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस फॉर ऑल द कालचक्र एंड ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर सर आई हैव रजिस्टर्ड नाउ फॉर कालचक्र, कैन आई गेट द 151 लिंक आल्सो? यस, you will be getting it, so don't worry at all, you will be getting। मैं बहुत क्विकली पोल भी आप लोगों के लिए ले रहता हूँ। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ विच पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम, विच इज अ काल चक्र, मार्च 2025 नहीं होना चाहिए, अप्रैल होना चाहिए, बिकॉज अब अप्रैल शुरू हो चुका है हमारे पास। एंड ब्रह्मास्त्र का भी मार्च हमने लिखा था, क्योंकि प्री सेशन वीडियो हमने मार्च में दिया था। डायरेक्टर साहब ये थोड़ा सा नोट करिए प्लीज यहाँ पर वेरी क्लियरली। एंड यहां पर मैंने पोल ऑन रखा है, पोल में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। देयर इज अनदर क्वेश्चन हियर, सर आई एम ट्रेडर इन ऑप्शंस, हाउ विल दिस हेल्प? ओके, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज दिस डेज आईवी इंप्लाइड वॉल क्या कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस इज व्हेन इज द मोमेंटम जनरेटिंग, व्हेन, नॉट वेयर, व्हेन। कौन सी डेट पे मोमेंटम जनरेट होने वाला है, कौन से टाइम पे मोमेंटम आ सकता है, वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज पता होना चाहिए वो
जो टाइम मैं बोल रहा हूँ वो टाइम साइकिल से पता चलेगा। दूसरा चीज पता होना चाहिए प्राइस एक्शन में मोमेंटम कब आ रहा है। सो देर आर टू थिंग्स टू इट, टाइम मोमेंटम एंड प्राइस मोमेंटम। टाइम मोमेंटम टाइम साइकिल, हर टाइम साइकिल के कॉन्सेप्ट से समझेगा। प्राइस मोमेंटम हमें पता चलेगा प्राइस एक्शन का जो ब्रेकआउट होगा स्विंग, वहां से केएसटी इंडिकेटर के थ्रू। सो दिस टू बोथ कैन बी कंबाइंड टुगेदर। ओके, सचिन आपका नंबर ड्रॉप करिए, माय कलीग विल डिस्कस विथ यू ऑन दैट। एमओसी हैव ऑलरेडी, अमृता आपने अटेंड किया हुआ है, ओके, ग्लैड टू नो दैट। आई एम नॉट हैविंग नॉलेज इन स्टॉक मार्केट, शैल आई ज्वाइन काल चक्र? विश्वनाथ, स्टॉक मार्केट का अगर नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या आपको सीखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। क्या आपको इसकी नीड है? डू यू रियली वांट टू मेक योर make trading as your maybe as a passive source of income, parallel source of income जिसे मैं कहता हूं, और as a full time trader? So if you are sincere about it, then you have to be here with me. If you are sincere about it, if you are going to follow the steps, if you are going to be disciplined, if you want to make a change, you can be there, you have to be there. But if you are just doing it for entertainment, please avoid that, because ये एक बहुत ही साइंटिफिक वे है ट्रेडिंग का। प्लीज अवॉइड इट। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर काल चक्र की मैं नेक्स्ट डे से 100% प्रॉफिट कमाऊंगा, नो, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। आई एम ट्रेडर सिंस 2 decades. I'm mentoring people for almost more than a decade now. I've been teaching Kal Chakra for more than a decade. पहले तो ऑफलाइन सेशंस होते थे, अभी ऑनलाइन होते हैं पोस्ट कोविड। And I keep telling the same thing. This is not foolproof. This is not 100%. There is going to be risk. You need to ensure when you lose money, you lose less. When you make money, you make more. That's the equation you have to maintain. How to place those stop loss, how to get out, how to derive those targets using time cycle, using gain square of 9, combining with the momentum indicator. ये सारी चीजें हम करेंगे. So if that's the case, then you have to be there for me, along with me. What is going to be taught in Kalchakra in brief? We look at Hurst time cycle concepts. We look at how to place time cycles, identify those time cycles right from 15 minutes to daily time frame to weekly time frame. How to identify those bigger time cycles जहां पर मुझे मल्टीबैगर स्टॉक्स के साइकिल्स मिलेंगे. When will Tata Motors reverse? When will Infosys reverse? If those questions are in your mind, then Kalchakra is for you. We look at those. We look at Gann square of 9. We combine with FLDs. But as I said, we look at all the historical charts. And then Kalchakra research का access आपको मिलेगा for Nifty research for 1 month in 151. That's separate advisory, which you have to pay 151. Can I get the recordings? Yes. Whether if you are not able to attend or if you are attending the session, recordings will be with you. So you don't really have to worry about it. Recordings आपको दी जाएगी for a period of 1 month. Plus, you will also be getting 5 bonus videos for lifetime. So the bonus videos are for lifetime. The recordings of Kalchakra is for 1 month. And you will have access to traders forum जहां आप अपने questions, doubts पूछ सकते हो. Do you see the Gann time cycles or square? No, I don't see the Gann's time cycle. I use for time, I use Hurst time cycle. For Gann, I use the square of 9. That's what I am doing. Okay, there are, will it work on call or put? It will work on either of it. So there is a way. So suppose if the market is on the downtrend, and if the low of time is broken, I know the cycle is still working. 23,800 का एक लेवल हमने देखा था, उसे विपसॉ किया, अभी तक क्लोज नहीं किया 23,800 के ऊपर अभी तक. बट वो विपसॉ भी क्यों हुआ? बिकॉज द 85 वीक साइकिल is a bigger cycle which is driving the smaller cycles, and so that whipsaw also happened. So, and we are now entering into the 55-day cycle zone. 16th April is the exact date. We are entering into that. So ये साइकिल जोन क्या है, इस पे क्या होने वाला, ये सारी चीजों का डिस्कशन काल चक्र में होगा. ओके, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यहां पर है, देयर इज अनदर क्वेश्चन. आई एम
Sure, no problem, Avinash. Absolutely not a problem. Any filter for the stocks? We'll discuss this in step-by-step fashion. We'll discuss these things, how to go about it. ये सारी चीजें हम काल चक्र में देखेंगे. Want to learn Elliott wave theory? साहिल कह रहे हैं अगर आपको Elliott wave सीखना है, Neo wave सीखना है with time cycle, the complete combination of these sacred signs, then you have to be part of Brahmastra. Brahmastra is about risk management, money management. We look at the sessions on Kalchakra. We look at how to identify those multi-bagger momentum stocks, those scanner. We look at the application of these theory, and it's an ongoing 3 months of mentorship which we have with leadership sessions in between. So that's complete Brahmastra for someone who asked about it. Which cycles to be used for trading? 144 years, 9/12. No, I use the Hurst time cycle. There is a standard cycle 56, 28. 28 is a lunar cycle, and Amavasya has been working fantastic for me. So that's the thing. What's there for the beginners? For the beginners, if you want to kickstart, you kickstart with time. That's the best way to kickstart your trading career because no one does that. Very few people are even talking about time. Everyone says don't time the market. I am telling you, it is possible to time the market or karna possible hai yaar. Everything is governed by time. There is 144 years of cycle, Mahakumbh, which happens. There is a 12 years of solar cycle, which is the Kumbh that happens. Then there is a 28-day of lunar cycle that happens. So everything is governed by time. And I'm going to give you a logic of an indicator, which is FLD, why it works 70-80% of the time using some concepts of science of trigonometry. I'm going to link that science of trigonometry with the science of time. So it's a science, as I said, science of probability. यहाँ पर sure, someone is saying, sir, can I okay, you can also pay a token amount and then balance in 24-48 hours to register yourself. You can do that. Definitely, you can do that. Okay. Job वाले कैसे कर सकते हैं? Okay, Dinesh. See, if you are even on a job, you don't have time to see the markets full time. You don't need to do that. As I explained you, ये जो भी हम कर रहे हैं, वो एक्सेल शीट आपको मिलेगी. उसके बेसिस पे जो टाइम आपको मिलेगा, वो आपको जाके डाल देना है आपके कैलेंडर पे और वो टाइम के बेसिस पे आपको प्राइस एक्शन चेक करना. सो वेदर यू आर ऑन अ जॉब, अनलेस यू वांट टू ट्रेड ऑप्शंस इंट्राडे और मे बी if you're an option writing, if you know option selling, then this time cycle will work like magic. You don't really have to do anything but option sell करो टाइम के बेसिस पे. 3 दिन बाद एक्सपायरी है, या तो जीरो होगा या स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा. स्टॉप लॉस कैसे डालना है, कहां डालना है, वो मैं एक मेथड बताऊंगा विच इज नोन एज सुपर ट्रेंड मेथड फॉर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट. वो भी हम करेंगे यहाँ पे. सो पूरा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट से लेके इनिशिएशन तक सारी चीजें हम देखेंगे. ओके, Zoom is showing thumbs up. If I am doing this, it shows thumbs up. रुशाल कह रहे सर, विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड इट? बहुत सारे जन के दिमाग में क्वेश्चन होता है. आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विथ यू. काल चक्र is much easier concept compared to wave theory, time cycle. It's much easier. You will be getting it. Okay, वो समझ में आएगा आपको. So you don't have to worry. I will not be able to explain you as an example now. It's not an example. Example मैं बहुत दे चुका हूँ already. वो साइंस के लिए मुझे आपका टाइम चाहिए. आपको कम से कम मुझे 10 घंटे देने. ये वीकेंड पे सैटरडे संडे 5-6 अप्रैल को सेशन है. वो 10 घंटे अगर आप दे सकते तो आप करिए, नहीं दे सकते तो अप टू यू. ओके, सत्यनारायण कह रहे सर, आई विल रिकमेंड यू जॉइन ब्रह्मास्त्र. ही इज अ ब्रह्मास्त्र मेंटरशिप पार्टिसिपेंट्स और वो कह रहे हैं. चलिए दोस्तों, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है. 3 months is enough for Brahmastra. Brahmastra is not 3 months. The learning is 3 months. An association is lifetime in Brahmastra. So it's not just 3 months. So it's a lot more on that. Can we filter multi-bagger using Kalchakra? Yes, but आपको वो stocks देखना आना चाहिए. So I would recommend, if you are someone looking for the complete totality of multi-bagger momentum stocks, identification, scanners,
risk management, then Brahmastra. If you are looking for, if you have, say, 10 stocks in your portfolio, which you trade, or 20 stocks in your portfolio, which you invest into, and you want to identify the time cycles of those, and you want to trade intraday on options or positionally or along with job, then Kalchakra, where we will be having the list of stocks that you have. I'll be giving you an Excel sheet of stocks, which around maybe 15 stocks. उसके ऊपर time past, not the latest one, past का time लिखा होगा. You just have to extend it across. वो सारी चीजें यहाँ पर होगी. Is it going to be swing trading in options? Yes, it's going to be intraday swing trading both. So because time है यार, मैं 5 मिनट पे भी अप्लाई करता हूँ इन कॉन्सेप्ट्स को, not necessarily intraday. I apply it even on 5 minutes chart. I apply it on 15 minutes chart. I apply it on daily chart. I apply it on weekly chart. There is something known as phasing analysis, which we do in this thing. So which means अगर आपने एक साइकिल को आइडेंटिफाई कर लिया, छोटे सारे साइकिल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं. That's the beauty of this science. Okay, I do not combine astro events. I have no understanding of that. So I don't know. I just follow the lunar cycle. I follow the Hus time cycle, and I follow the Gann square of 9. This is what I follow. Awesome, guys. So I think we are running out of time. I have another meeting to catch up at 5 with someone. So I will have to leave here, but it's going to be a wonderful journey. Everyone who all are part of this Kalchakra or Brahmastra upcoming session, just give me a big thumbs up, or at least a thumbs up, or write down here that you are a part of it, because I'm very excited about this weekend. I'm going to be giving away this science, which I've been practicing for more than a decade, to each one of you, and it's going to be lovely. So जो part है यहाँ पर एक thumbs up दीजिए. I think Subi is here, Hitesh is here, Mini is here. Fantastic. बहुत सारे जन हैं यहाँ पर part of these Kalchakra and Brahmastra sessions. एक confirmation मुझे मिल गया है यहाँ पे. बहुत सारे जन और भी आ रहे. There are a lot of questions popping up, but I have to rush now. I'll just take one final question if I have. Okay, one final question. यहाँ पर बहुत सारे हैं, उसमें से डायरेक्टर साहब एक क्वेश्चन दीजिए जो relevant to everyone हो. मुझे यहाँ पर how much capital required for trading using Kalchakra? That's an interesting one. यार अगर आप ट्रेड करने आए हो, कैपिटल तो लेके आओ. बिना कैपिटल के आप क्या ही ट्रेड करोगे? अगर आपके पास में एटलीस्ट 1 लाख रुपीज है, तब जाके कुछ कर पाओगे. So I would suggest that you need at least 1-2 lakh rupees as a capital, trading capital that you are okay to risk. And stop loss लगाना आना चाहिए. उतना नहीं है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, because then you will be just wanting to double your money. It will not happen. It will not happen overnight. It will not happen overnight. वो आपको ध्यान रखना है. Okay, but options में होता है वैसा. I know that कि overnight double, triple, 4 times होता है. We look at those fat tail events. These are known as fat tail events, which will happen, say, 2% of the 100%. अब वो 2% of the 100% होता है, तो एक्सपायरी डे पे उसे कैसे कैपिटलाइज करें देखेंगे. We'll look at those. How will time and KST help you to identify those possible areas of fat tail events? But that's going to be about using this KST. So guys, repeat: first time cycle, FLD, how to plot valid trend lines, how to look at Pring Special K, KST, combining with super trend, how to derive all of these things together. We are going to do this in Kalchakra. Plus Kalchakra research. You will be a part of Elliott Kalchakra research, who has paid 151 separately. Along with Kalchakra, you will be a part of that. Thank you very much, guys. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. It was wonderful speaking to you all. See you over the weekend, and become a wonderful trader. Thank you.